you guys. तो I hope कि आप लोगों ने इंस्टा आईडी पे जाके क्वेश्चंस देख लिए होंगे. Those are expected questions for your examination. Now there are lots of students who have been talking about MEG 5, MEG 3, MEG 4 and BG 106. Really, there are lots of other students those been waiting for this live session particularly, that they can ask a certain question and then how we're going to really get the maximum benefit out of it. So what short the things that we guys need to clear and how we're going to clear each and every topic. So there are the questions on my Insta ID that you can go on that one and we can ask the answers. See, you can ask the answers here, that how we're going to clear these concepts, for the basic norms that we guys need to understand, and how we're going to clear each and every point. So this what I really want you guys to do. First thing, do ask the questions that was been in your mind, and then secondly, how you are going to prepare. And those who have the exam today, really, there are the certain students those who have an exam today. See how's the paper. I want to know that. मुझे वो बताएं please. Yeah, I'll go with the certain norms. कुछ लेके आऊँ आप लोगों के लिए जो दिखाऊंगा यहाँ पे मैं आपको आज. Yeah, I'm just going to show you the things. I hope you all are well prepared now for your exam. So don't forget to comment box so that I'll be able to help you out in your preparation. Yes, in your preparation. For that you need to write on comment box. वो अभी तक नहीं आया किसी का. कमेंट आते ही हम क्लास को शुरू करेंगे बेसिक पॉइंट्स के साथ. Let me do insert the recommendation YouTube. So yeah, come to the point. The first thing that, sir, MEG 5, MEG 6, MEG 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11. These videos are ready now. Yes, these videos are ready now. You're going to get your upload. Seriously, anytime as I get free, definitely I'm going to upload all that. The one more thing that we guys need to clear is basic balance. Is the basic balance that we guys need to clear in this particular task, the task of your examination that's going to take place now. Up by जिनके पेपर हैं, see those who have the exam now, tomorrow or day after tomorrow, and then 11, 12, 13, 14, 15, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर रहेंगे, हम उसको क्लियर करेंगे. देन विल चेक आउट द बेसिक नाउ कि क्या करना है, कैसे करना है. तो चलो आज शुरू करते हैं MEG 04 से. दैट्स एन एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज. आई रिपीट, एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज. अब एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज में कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, क्या फॉलो होगा, सारे यहाँ डिस्कस करते हैं. तो यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज हियर. सो आप लोगों ने क्या क्या टॉपिक करने हैं, कौन सी चीज़ें होंगी जिनको हम क्लियर करेंगे, एंड देन हाउ विल गोइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. यस, द बेस्ट आउट ऑफ इट. So please check out your notebook and a register so that you can write on pen. Sorry, yeah, you need to check out your pen and notebook so that you can write on each and every point that you need to clear for your exam. Yes, for your exam. So here I'm talking about, first of all, what you need to do for MEG 04. First, start up with short note. I repeat, start up with short note. तो मैं यहाँ बता देता हूँ that we're going to start with short notes for MEG 04. Here I'm going to talk about the short notes of MEG 04. Yes, here the short notes, guys. Yes, I'm going to deal with the short notes of MEG 04. So be ready for this. You need to have a pen along with you so that you can write on each and every point. Yes, each and every point. The first, I repeat, langue and parole. What does mean langue and what is parole? Langue stand for language, parole, while moving from one place to another, and we'll get to know lots of the new words by talking to other, by talking to different communities, the dialects and all that comes in a mind of the persons that really we guys need to clear. So it's all about langue and parole. I repeat, langue and parole, one of the most important one that you need to prepare for your upcoming exam of aspects of language known as 2B, the MEG 04. Jump on next one, competence and performance. This will definitely come in your paper this time, guys. If you're not prepared, then do it right now. Seriously, you don't have much time left with you for examination. First one, language and parole. The other one is competence and performance. The third one, Indianization of English. Yes, I repeat, Indianization of English. Those who come on first time on this channel, guys, don't forget to like, share, and subscribe to the channel immediately so that you can get all the videos. So here we have the first, language, parole, competence, performance, and then we have the Indianization of English.
Yes, I repeat, Indianization of English. Next one. Reduplication is the process of word formation. This is something very important. Prefix, suffix, coupling, blending. This is a part of reduplication. Yes, this is all about a reduplication. Those who don't know that what short things that we guys need to get. If you want something else, then please come in the comment boxes for you guys. If you want some other paper, you want some other talks, then yes, you can write on comment box. I'll definitely reply. So we were on the reduplication as a process of word formation. Aptitude, I repeat, aptitude and an age as a learner factor in second language acquisition. So we can have the second language acquisition paper. Language acquisition again is a major topic that will come in paper in any form, whether in short note, whether in full-fledged question. 25s in English. Yes, I repeat, 25s in English, and I can bet over this that the short note that will be in your paper are going to be out of these only. Yes, out of these only. So make sure you guys get each and everything clear in your mind. Come next one, 25s in English, derivational morphology. There's something very, very important, derivational morphology. Then we have the French borrowings in English. Add the Latin borrowings along with the French because it will definitely come. So what is the word formation? Word formation is morphology. When we try to add on the words, those have been already existing, and we'll try to add some other words with the help of certain prefix, suffix, or in between that the certain that affixes. Really, that is word formation, and that word formation is known as to morphology, and is a major part for aspects of language. Then derivational morphology is a part of again word formation. Code switching and code mixing. Yes, I repeat, code switching and code mixing. Code switching, sir, switch करना, words को switch करना, language को switch करना from one to another. Yes, I do talk about this, that when I'm talking to English language, I'm just jumping from English to Hindi. That's a code switching. But when I'm using more than two languages, really in a particular sense that I'll be able to speak in Hindi, Punjabi, and English, this is code mixing. Now I'm trying to use the different languages all together. This is what we guys need to clear. Redundancy, sir, it's reduplicancy, not redundancy, reduplicancy. I repeat, Reduplication. I repeat, Reduplication. Reduplication. Come next one. Code switching, code mixing. Vowels of English. This is something very, very important. Vowel of English. Now blending. What is blending? Blending is really important. That will come in the paper. Then we have the conversational implicature. I repeat, conversation implicature. What is conversation implicature? Then foregrounding. One of the most important is foregrounding. Along with the foregrounding, I need to know one thing. That is geneticism. So yeah, just 2 minutes. I'm definitely going to come on IMG 10 14 2. Definitely I'll be there. Foregrounding, yes, we guys need to clear the foregrounding, negation, back formation, language and style, or we can say add register to in it. Language, style, register, parallelism, I repeat, parallelism. Now, ethnography of communication, ideology of language planning, decline of bilingualism, origin of language, cardinal vowel, anaphora, and the last not the least, the cooperative principle. So what does mean by the cooperative principle? It describes how the new people achieve effective conversation communication in a common social situations. Yes, in a common social situation. That is how listener and speaker are cooperative and mutually accept one another to understand in a particular way. This is known as the cooperative principle. You're going to find this short note in your paper this time. So guys, can't help more than this. Jump up to the next part. There's a student, Shreya, she really wants to know about MEG 10 and MEG 14 questions. So I'll come to the MEG 10 and MEG 14 question. I hope that you guys have tried down all the short notes that I mentioned for your paper. Yes, for your paper that you guys need to do. So come up to MEG 10, most expected question for this time. Not more than 20 or 25. Yes, not more than 20 or 25. In between, see, in between, what you guys need to do, you need to like the video that you're not doing. I don't know whether you guys are subscribing channel or not. Really, this is what I mean. Always want you to subscribe the channel so that more the student can access to my videos and can clear each and thing.
The first question that you guys need to clear this time, I repeat, you guys need to clear this time from MEG 10 is critically analyze the circumstances in which English was introduced into India. Should I repeat these lines? There's something very important. Yes, critically analyze the circumstances. Sure, I hope that you are right in this. Critically analyze the circumstances in which the English was introduced into India. So English is introduced into India. That we guys need to understand that this question definitely come in a paper, and we guys need to know everything about it. This is the first question. Yes, the first question we guys need to understand that what is it and how we're going to clear the concept. किन चीज़ों को फॉलो करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए होती है, and how we guys going to get each and every point. He is going to get each and every point, and that too, seriously, that too with a certain norms here. That how I'm going to clear, how I'm going to clear the concepts. This is what we guys need to do. Yes, sir, following your notes. Okay, Shia, all the best. Now we have Aman. Aman ने कुछ लिखा है, sir. What is coherence? Sir, coherence is all about the clarity. Now I've been very clear about what I'm telling you guys to do for your examination. That you guys need to do these series. If you're able to do this, there's no need to do anything else. So coherence really been talking about the clarity of a certain norm, how we're going to clear the basic points. What is the clear and plain explanation? This what we need to know. I hope you get the point. Now come on, next one. Now Shia, be ready. Comment on Macaulay advocacy. I repeat. Comment on Macaulay's advocacy of the introduction of English in India. Why Macaulay introduced English in India? Because he want Indians to speak in English only. The first thing he did while he came in India, that to stop Hindi, Urdu, Sanskrit, Farsi in a primary level of language, because he don't want Indians to really speak all these languages. He want Indians to speak only English because they are going to serve Britishers. And when you know the English language, definitely after that you're going to serve the Britishers only. So he want perfect servants, and that perfect servants, for that you need to know English. So we do have that point, that's the decolonizing the mind, and that is somewhere we guys need to clear. Make sure this is something very important. Now Ruby Shaw, sir, character chart कैसे बनाएं? Ruby, please be in the class. I'll definitely make a character chart and tell you how to make a character chart. I already made a video for this, but definitely I'll make the character chart here too. तो उसके लिए क्लास में रहना जरूरी होगा, ठीक है. इन बिटवीन जो बच्चे नए आ रहे हो, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. लाइक्स नहीं करते आप लोग. Come next one. Discuss the contribution of social reform movement to be institutionalized. This is not the most expected but confirmed question for your examination. Discuss the contribution of social reform movement to be institutions of English studies. So, काफी सारी चीजें, what to do, how to do, what are the basic points that we guys need to clear. These all comes in mind, that how we guys are going to clear, what are the basic concept that we need to follow. This all comes here, that we guys need to understand each and every point. Yes, this is something that we have to. This is my Insta ID. Yeah, Sisti, look at it. It's at the rate Classy Rahul. You can find out my Insta ID there. Jump up to the next part. I really don't want the comments to stop. I really don't want the comments to stop. Come up with the lots of questions that you have in your mind and just write on everything. Seriously, everything that comes in your mind. Don't waste even a single minute. I don't want the comment box to be stopped. Please don't give the time to take a breath. Jump up, guys. This is something that I really want from your side. Next one. What do you think the English was marginalized during the English movement? Yes, this is something. English was being marginalized. It was marginalized first of all, but now it is esteemed. It is something that we guys need to know. If you don't know how to speak English better, another people definitely going to think that he is not an educated guy because he don't know how to speak in English. भाई हमारी हिंदी लैंग्वेज है. We are Indians. Our mother tongue is Hindi, but still we've been ashamed to speak in Hindi. This what we need to understand. Sisti, sir, MEG2 के लिए कोई last tips? डेफिनेटली सिस्टी अभी मैं बताऊंगा, और मैं उसी के लिए आया हूँ आज, क्योंकि शायद MEG2 वालों की आज लास्ट क्लास है, क्योंकि कल के बाद शायद वो क्या करेंगे, आई नो. तो यहाँ पे MEG2 वाले बी रेडी, उन्हीं के टिप्स लेके आना, मैं उन्हीं के लिए बताऊंगा. तो तैयारी पूरी करो. आई होप यू आर प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम. कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए मुझे. कमेंट नेक्स्ट वन. तो यार अभी MEG10 लोगों को क्या करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं. आई होप दैट रियली देयर इज स्टूडेंट
Shreya Sisti, who is this now? Yeah, Shreya, ऐसा करते हैं MG10 के क्वेश्चन भी कल अपलोड करूंगा. I am going to you have the plenty of time till today. Seriously, you do have lots of time. But MG do have the paper tomorrow. So can I go to MG10, please? If you all need that, I am going to do all this. Here, first I'll give the answer of yours. Sir, Jan Mohammed and his views passes to India. Can you explain this in till? Definitely, I can explain all this. Need not to worry. If the passes to India, I'll definitely go and explain this. Okay, so I understand. It's okay now. So, Sir Jan Mohammad's views on passage to India. अब आपने कहा सर दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू इंडिया. क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, कैसे क्लियर करता हूँ, उनको फॉलो अप कैसे करना है. लुक गाइस, दोज हु आर एमईजी 02 स्टूडेंट्स, जिनको बोलते हैं बेटे ड्रामा के स्टूडेंट, वो पेपर कैसे करेंगे. हाउ आर यू गाइस गोइंग टू क्लियर योर पेपर. अगर आपका पेपर है कल और आपके पास टाइम नहीं है, अब आपके पास सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और सर हमें लास्ट मोमेंट पे एक एक चीज़ आनी चाहिए, तो सर अब मैं क्या करूं. अब मैं सबसे पहला काम करूंगा, मैं एक प्लेन शीट लूंगा. करेक्टर चार्ट वाले अलर्ट हो जाओ गाइस, दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट. आई एम गोइंग टू टेक अ प्लेन शीट नाउ. वेदर इट्स MEG 2 or 3, you guys need to make a character chart. Ruby, make sure this something you must keep in your mind. Yeah, this is something that you must keep in your mind, that how you are going to do each and everything and why it is really important. Why it is really important काफ़ी सारी दिमाग में आते हैं, मतलब हाउ आई एम गोइंग टू डू, व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट, चीज़ों कैसे क्लियर करना है, कौन सी चीज़ें मुझे बिगनिंग से लास्ट तक आनी चाहिए, वो सारी की सारी आप यहाँ पे करोगे. आपने कहा सर दिस आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग हियर, बट इन वॉट मैनर सर, हाउ आई विल एबल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, चीज़ें कैसे होंगी, फॉलोअप कैसे करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ मैं बताऊँगा इस पेपर के अंदर. पंखी लाल मीना सैमी 05, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कमेंट, डोंट वरी, मैं यहाँ हूँ और आपको पूरा बताऊंगा ये कैसे करना है. आपने उसकी आप टेंशन मत लेना. नाउ कम अप टू दिस पॉइंट. दिस इज समथिंग दैट रियली आई वांट द स्टूडेंट्स टू डू. आप कहते हो यार क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा. यहाँ आते हैं, ये रहा पेपर एंड यहाँ से मैंने शुरू किया. आप लोग तैयार रखना सारे सारे. सबसे पहले मैं लिखा मेन प्रोटेगनिस्ट को. आपने कहा सर दिस इज दैट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड. मैंने बिल्कुल सेंटर में डॉक्टर फोस्टर डाल दिया. लुक एट डॉक्टर फोस्टर. आपने कहा कैरेक्टर चार्ट बना दो सर, यहाँ से शुरू करते हैं. द प्ले फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड इज अ प्ले अबाउट रेबल. नो वी कैन से इज अगेंस्ट द सोसाइटी, या वी कैन से द रेबल बिकॉज इट गोज अगेंस्ट द सोसाइटी एंड हाउ द थिंग्स विल गो ऑन. उसको हाईलाइट किया. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डॉक्टर फोस्टर को लिखा. अब डॉक्टर फोस्टर्स के दो नोटोरियस फ्रेंड्स थे. हाँ रिपीट, दो नोटोरियस फ्रेंड थे. सबसे पहले उनको लिख लेना क्योंकि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं. वो दोनों के दोनों आपको ऑन टिप होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो दोस्त क्लियर है तो अब चीज़ों को क्लियर कर लोगे. सर वो दोस्त कौन से, वेल्डास एंड कॉर्नलेस. तो मैंने कहा नोटोरियस फ्रेंड्स. मैंने ऊपर सबसे पहले उसके नोटोरियस फ्रेंड्स दिए क्योंकि ये दोनों वो दोस्त थे उसके जो उसको एडवाइस कर रहे थे कि यू नीड टू गो टू द स्टडी ऑफ मैजिक, नेक्रोमेंसी को स्टडी करना है. क्यों, क्योंकि वो आपको वो चीज़ दिलवा देगी जो बाकी लोग सोचते भी नहीं. आपने कहा सर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. लुक मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं वो करेक्टर लिख रहा हूँ जो डोमिनेंट करेक्टर की लाइफ में चेंज करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर जो आप लोगों ने शायद ध्यान भी नहीं दिया या आप लोगों को शायद पता भी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है डॉक्टर फोस्टर्स में, एंड दैट इज कोरस. आई रिपीट कोरस. ये एक एक इवेंट को बताएगा, आपको बताएगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किन चीज़ों को फॉलोअप करना है, कैसे क्लियर करेंगे, कैसे कनेक्ट करना है आपको. दैट्स कोरस. के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो तो आपको आना ही चाहिए, दैट इज मेफिस्टोफिलीस. यस आई रिपीट, मेफिस्टोफिलीस. अब आपने कहा मेफिस्टोफिलीस सर ये कौन है, हु इज दिस मेफिस्टोफिलीस. तो या तो इमेज आई थी जो उसका जो जैंट सी फिगर, मेफिस्टोफिलीस वाज ट्राइंग टू वार्न डॉक्टर फोर्सेस, भाई ये मत कर, सीरियस इफ यू आर गोइंग टू डू दिस डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी. अगर ऐसी होगी तो डेफिनेट दिक्कत होगी तो सीरियसली यू बी इन ट्रबल. लेकिन डॉक्टर फोर्सेस तो पक्का था कि यार मुझे करना है, आई हैव टू डू दिस. अब जब करना है तो फिर कोई रोक नहीं सकता ना. तो आपने कहा सर एक आदमी था जो पूरी स्टोरी में डॉक्टर फोस्टर्स को समझा था, भाई माफ़ी मांग ले भगवान से. यस दिस ओल्ड मैन, he was coming again and again and again and again to tell Dr. Foster's माफ़ी मांग ले भाई.
माफ़ी मांगेगा, गॉड बहुत मर्सीफुल है, माफ़ कर देगा। सर सबसे इम्पोर्टेंट, गुड एंड बैड एंजल। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड एंजल एंड अ बैड एंजल। अगर आपको ये नहीं आती तो फिर तो डॉक्टर फोर्सेस भी नहीं आता, क्योंकि ये पेपर में 100% आने वाला है। आप पेपर में देखोगे दैट दिस इज बीइंग योर पेपर, तो आपको एक एक चीज़ ऑन टिप होनी चाहिए। गुड एंजल, बैड एंजल, फिर आएंगे नीचे, सीधे से नीचे आएंगे। नीचे हमारे पास कैरेक्टर्स हैं बहुत सारे हैं। आपने कहा सर गुड एंजल बैड एंजल, सीधे से एक स्पिरिट जो सब बताइए अच्छा करने के लिए, जो बोलेगी बार बार वॉर्न करेगी, और एक स्पिरिट जो कहेगी कर ले यार, मजा आएगा, सीधे से मजा आएगा, यू गोइंग टू गेट फ्लैश व्हाइल डूइंग दिस, डोंट स्टॉप, जस्ट गो फॉर इट, दैट्स समथिंग। देन लूसीफर, वी हैव बेंजुबर्ब, सीरीज है डेविल्स की। देन वी हैव द वैगनर, सर एक ही आदमी है जो थोड़ा कॉमिक ह्यूमर क्रिएट करता है पूरी स्टोरी के अंदर, और कोई नहीं, डॉक्टर फोर्स नो कर है जिसका नाम वैगनर है। क्लोन, रॉबिन, रैफ, नाउ वी हैव द हॉर्स कॉजर, द स्कॉलर्स, पोप, एम्पायर, राइट, नाइट्स, ब्रूनो, ड्यूक ऑफ वॉलनट, मैरिटॉन, फेडरिक, ये कुछ स्मॉल कैरेक्टर थे जिनका बोलते हो माइनर कैरेक्टर्स। The first, we guys need to understand major and minor characters. Then we guys need to know how we going to serve all these in a short span of time and get the maximum out of it. Yeah, the maximum out of it. ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये था आपका वो पॉइंट जो आपको क्लियर होना चाहिए, एंड दिस इज समथिंग दैट वी गाइस नीड टू नो फॉर ईच एंड एवरी ड्रामा। और जिनका कल पेपर है, मतलब पेपर है MG2 का, वो तैयारी कर चुके हैं, तो भाई क्या करो, डॉक्टर फोर्सेस गोटा मारो पी जाओ। उसका बाद एक और करना, दैट्स हैमलेट, मिडसमर नाइट ड्रीम, सर मर्डर इन कैथेड्रल, आई रिपीट मर्डर इन कैथेड्रल, पिगमिलियन और लुक बैक इन एंगर। चॉइस इज योर। लूसीफर इज द प्रिंस ऑफ हेल, इज द प्रिंस ऑफ हेल। पूरी चेन थी लूसीफर, इनके बीच में बेंजुबर्ब भी आता है, उसको याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सृष्टि ने क्वेश्चन पूछा था बीच में, गुड इवनिंग सर, कैन यू प्लीज टेल मी now how to solve annotation? Yes, Alan, I have told you earlier that really how to solve annotation, it's very easy to solve annotation. I'll definitely tell you again, need not to worry, I'm going to give the answer of this annotation too. Next, Ruby. सर MG03 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 वाले नहीं मिले, क्यों नहीं मिले आपको? मैंने चेक करो, मैंने अपने इंस्टा ID पर डाल दिया है, वहाँ मिल जाएंगे आपको, 100% मिलेंगे वहाँ, क्यों नहीं मिलेंगे? Then Panki Lal mean answer MG5, definitely I'm going to give now MG05. Sister sin answer, play with the Western world is a player rebel. Yes, it is, and I told you why. सिस्टी सर प्लीज एक्सप्लेन माई क्वेश्चन। सिस्टी मैंने बताया बेटा, ये रेबल है क्योंकि ये सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट, और कहीं ना कहीं एक आदमी जो अपने बाप को मार गया है, ठीक है ना, ही बिकम अ हीरो, सीधी ही बिकम अ हीरो इन सोसाइटी। सो दैट्स द प्ले फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड दैट वेस्टर्न वर्ल्ड इज नॉट बीन गुड फॉर एनीवन, बिकॉज पीपल डोंट लाइक दिस गाय, but now he become a hero because he did that thing that was not being accepted by anyone. Jump up next part, we have the Anurag Dwivedi sir. Now practice the American English, ME04. So practice the American English. Americans don't follow the basic, Americans don't follow the grammar, they just move with the certain norms, they believe in certain pathologies, the phrases and structure, the syntax that are really valued over there. They won't care about the norms that was being mentioned in an earlier, or in the language and how the language was being used by the certain norms. This all come along with, you need to mention the structuralism, this language sign that was being adopted by the certain norm. Here we guys need to give the explanation for the Bloom therapy, in which he do mention about the language and its uses. अगर ये सारी चीज़ें ऑनेस्टली आप पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर कर दोगे, यू विल गेट द पॉइंट दैट हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. And honestly, when you've been preparing this particular question, the characteristics of American English, you need to prepare the difference between European and American English. And to clear this, what you need to do, कुछ नहीं करना सर, चैनल में वीडियो डाली हुई है, उस वीडियो को थॉरली देखो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फ्रॉम द बिगनिंग टिल लास्ट, यू विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग. ज़्यादा की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी गुजारा आता है, तो थोड़ा बहुत परफेक्ट होना चाहिए. मैंने कहा ना, डोंट गो फॉर एवरीथिंग, सिलेक्ट लिमिटेड, बट वो लिमिटेड ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन बोलते ही आंसर निकलना चाहिए, और आंसर जब तक आप पूरा क्लियर ना कर दो, आपका रुकना नहीं चाहिए. दिस व्हाट आई वांट. यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स नहीं रुकने चाहिए गाइस. कमेंट्स रुक रहे हैं तो जहाँ कमेंट्स रुकते हैं वहाँ मुझे सोचना पड़ता है दैट आई शुड कंटिन्यू दिस वीडियो और नॉट. तो कमेंट्स नहीं रुकने चाहिए, आपको कमेंट चलते रहना चाहिए. इन बिटवीन MEG05 के लिए पंखी ने बोला, पंखी MEG05 इलेक्ट्रिक क्रिटिसिज्म थ्योरी. आप ऐसा करो, आज सबसे पहले आप शुरू करो मार्क्सिज्म से.
एक ब्लॉक ऑन टिप करो, एंड दैट इज मार्क्सिज्म. What is Marxism and how I'm going to get the concept of Marxism clear in my mind? The Marxism is all about class struggle. Class struggle. So, what is the class struggle? The struggle between rich and poor. The struggle between ideologies. The struggle between the certain norms that come with the social realism. So, social realism is really important part. Ideology is really important part. Then we guys need to clear the mode of production. That is a factor of production of economy. Land, labor, capital, entrepreneur. Now how this land, labor, capital, entrepreneur works, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, चीज़ों को कैसे क्लियर करना है, हर चीज़ हमें ऑन टिप आनी चाहिए. Along with that, we need to clear the difference between base and superstructure. इसको मैं बताता हूँ, बीच में कमेंट आया उसको पढ़ते हैं. सिस्टम आंसर MEG2 का मैंने 7 प्ले कंप्लीट कर लिया है एल्केमिस्ट मॉडर्न कैथेड्रल को छोड़कर. इज इट इनफ टू एग्जाम? देखा तो एल्केमिस्ट और मॉडर्न कैथेड्रल छोड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी साथ तेरे ऑन टिप है, तो आई एम श्योर दैट यू गोइंग टू क्रैक द पेपर इजीली. लेकिन डू रिमेंबर, सीरियसली डू रिमेंबर वन थिंग, डोंट फॉरगेट टू ऐड quotation in between the answer. Second, don't ever start your answer with a summary. No way, I repeat, no way to start your answer with summary. Third, try to add the background of writer if it's possible for you. See, this is not compulsion that you have to give an answer in each and one, but if you're comfortable with it, try to add the background of writer. And this will give an edge to your answer. This is something that I really want you to do. So language variation, why does language occur MEG04? Language variation is the key in India. Is we are living in a diversified country where after every 10 to 12 kilometers we have a different language. And the people do speak in different languages, some of the regional language, some of the dialect, the register or the jargon that won't be a part of India. Now, so the variation is a major part. To understand this concept, we guys need to understand the socio-linguistic term. That is block number 7 or 8 for your paper, and you guys need to clear the concept from the beginning till the last, as here we have the lots of things. That lots of things add on the first part, that how we are going to convey the norms, and then second, here we have different ideologies. Different ideologies मतलब सीरीज अगर मैं बोलूँ तो वेरिएशन या समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप स्टाइल भी बोलते हो, स्टाइलाइजेशन, दैट समथिंग इंपॉर्टेंट. क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या है. एग्जाम में हमारी प्रेजेंटेशन बहुत माउंट करती है. आई रिपीट, द प्रेजेंटेशन, द वे यू प्रेजेंट योर आंसर, द सेम थिंग दैट हाउ वी सर्व द फूड, how we serve the food to the people, those have been interested in it. And really, if the serving sense, or I repeat, the presentation was really too good, the people love to have that things clear in mind. That's what we guys need to know. I hope you get my point. 60 RTC कवर हो जाएगा 7 पेज में डेफिनेटली, क्योंकि 4 तो वो की हैं जिनसे आते हैं, जिसमें मिडसमर नाइट ड्रीम है, हैमलेट है, डॉक्टर फोस्टर्स है, एंड लुक बैक इन एंगर है, और वेटिंग फॉर गॉडॉट भी क्या बच्चा, तो फिर तो सीरियस इज कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. बाकी एवरीथिंग इज रेस्ट इन गॉड्स हैंड. हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं, करने वाला सिर्फ वो बैठा है. तो आई रियली डोंट हैव एनी सेटिंग नहीं नो, तो मैं सिर्फ अपने गेस्ट पे काम करता हूँ, और बाय द गॉड गेस्ट हमेशा गेस्ट काम करते हैं. तो नीड नॉट टू वरी, जस्ट गो विद फुल फेथ ऑन योरसेल्फ एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट. नीड नॉट टू वरी डियर. विश यू ऑल द बेस्ट. कम ऑन नेक्स्ट वन. सर किसी और के डाउट हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आए. कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स आने चाहिए. किसके कमेंट होंगे, चीज़ें कैसे क्लियर होंगी, उसको फॉलो करेंगे. ओके सर, थैंक यू, यू आर वेलकम डियर, एंड मेक श्योर दैट यू विल गोइंग टू रूल दिस पेपर. जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सर MEG05 के कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो पेपर में आते हैं, आने भी चाहिए, मतलब दिमाग में होना चाहिए ये क्वेश्चन तो मुझे आने चाहिए, मतलब आई नीड टू नो दीज आंसर्स क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें, करने का तरीका क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें बिगनिंग से लास्ट तक ऑन टिप होनी चाहिए. मतलब दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, वो काफ़ी सारी में, जैसे कि ये पार्ट आ गया, जैसे कि सर मार्क्सिज्म समझा था मैं अभी, आई होप आपको नहीं क्लियर हो. उसमें क्वेश्चन होता है, राइट अ शॉर्ट मार्क्सिज्म इज अपोज टू बोथ आइडियलिज्म एंड मैकेनिकल मेटेरियलिज्म. शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? डेफिनेटली आई शुड. Write short essay on how Marxism is opposed to both idealism and mechanical materialism, क्योंकि ये क्लास स्ट्रगल को बताता है. यस, इट डू टेल यू अबाउट द क्लास स्ट्रगल. क्या है क्लास स्ट्रगल, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करता है, एक एक चीज़ को बताता है कैसे, कौन से पॉइंट्स है जो हमें आने चाहिए.
एंड वाई वी गाइस नीड टू क्लियर दिस, क्योंकि सर ये हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को समझने में, उनके ऊपर काम करने में। वो था मेटेरियलिज्म नहीं है भाई, वी आर नॉट वेरी रिच, वी डोंट हैव दैट मेटेरियलिस्ट थिंग्स इन लाइफ, वी कैन नॉट बी आइडलाइज विद सर्टन नॉर्म्स दैट आई नीड टू बी आइडलाइज विद दिस और दैट और दैट और दैट। दिस व्हाट वी गाइस नीड टू क्लियर नाउ। पहला तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन मार्क्स यूज द बेस सुपर स्ट्रक्चर रिलेशन। बेस, योर इकोनॉमिक क्लास डिफाइन फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। आप कहाँ बिलोंग करते हो, करने का तरीका, ये चीज़ें कैसे क्लियर करते हो, डिफाइन होता है। क्या था, हाउ डज द आर्टिस्ट बिकम कॉन्शियस और कॉन्शियस। आर्टिस्ट, हु इज द आर्टिस्ट, राइट इज द आर्टिस्ट, मूल राजानंद वाज द आर्टिस्ट, रियली विलियम शेक्सपियर वाज द आर्टिस्ट, Anita Desai is the artist, Chetan Bhagat is the artist, and they write the story from that particular background from where they belong, जहाँ से, जैसे एरिया से, जैसी लोकेलिटी से, जिस इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करते हैं, वो वैसे ही कहानी लिखते हैं। Yes, they write on the story in that way only. So we need to understand this. In between we have the comment from अनुराग द्विवेदी। लैंग्वेज वेरिएशन पेगुलम का एग्जांपल दे सकते हैं एलिजा का, बिल्कुल दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। सोचो एक लड़की जो फ्लावर बेचती है उसकी लैंग्वेज कैसी है, उसके बाद वो एक ऐसे फेज में आती है जहाँ पे एक एसेंट आता है, एक क्लास आती है, एक चार्म आता है, बिकॉज नाउ शी बिलोंग्स टू एन लाइट क्लास, अ क्लास ऑफ द रिच पीपल। Now, how the rich people do speak and how the local people, those who be middle class or low middle class, going to speak, there's a huge difference between it. Yes, there's huge difference. That is actually a variation. You can give the example. So, what really short notes have been expected in Marxism? Mode of production. Yes, we have the mode of production. We do have the idealism. We have the social realism. We can have the certain base or superstructure in a different norms, one by one. So, I hope you guys are getting each and everything in your mind, and I'll be able to answer each and every question that will be raised by you people here. So I hope if anybody have really any sort of doubts or any sort of dissertation, please comment box. I'm definitely here to give you the answer that what you guys want. Yes, this is what I really want, that every student need to get each and every answer what they been expecting from my side. So I'm not seeing any new comment now. There's no new comment, so we have a limited new comments now. So what should I do? I should wait for the new comments or I should quit the show? काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में आ रही है कि यार क्या करना चाहिए फिलहाल। आपके कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रियली वेरी लेस टुडे। आई होप आई शुड मेक लाइव सेशन टुडे बिकॉज टुमारो वी हैव एग्जाम। सो काफ़ी सारी चीज़ें इसी के लिए हमें कि कल एग्जाम है, आप लोगों को डाउट हो तो मैं सॉल्व कर दूंगा, बट लेट्स सी व्हाट वी गाइस कैन डू। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलना ज़रूरी है, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आपको जो नहीं आता आप एक नहीं 100 बार पूछ सकते हो, बार बार पूछ सकते हो। आई एम हियर टू गिव द आंसर। जंप अप टू नेक्स्ट सेशन। सर व्हाट अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर MEG 14, MEG 7, MEG 19, 1919? Sir, there's lots of questions that comes in mind of the students about MEG 13 too. तो यार ये क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के हैं, उनके दिमाग में आ रहा है यार ये होगा कैसे, करेंगे, करने का तरीका, कोई चीज़ें कैसे क्लियर करनी, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आपके पॉइंट्स क्या हैं, कैसे क्लियर करोगे, कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए, एंड हाई इन व्हाट मैनर यू विल गोइंग टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, वो सब फॉलो करना है यहाँ पे। और एक एडवाइस देता हूँ छोटी सी, जिन्होंने पेपर देना है अभी दिया नहीं है, देने वाले हैं जल्दी, ठीक है, उनको एक काम करना है गाइस, आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस करो। More you write, more you get. I repeat, more you write, more you get. तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। हम आंसर कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है, क्या बेसिक फॉलोअप है, वो देख लेंगे। और आपका फिर क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी का आंसर वर्ड फॉर्मेशन में आएगा। मॉर्फोलॉजी वर्ड फॉर्मेशन ही होती है बच्चा, वर्ड फॉर्मेशन में नहीं है, वर्ड फॉर्मेशन को ही मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ये दो तरह की होती है, एक डेरिवेशनल होती है, एक अफेक्टिव होती है। आपने क्या अफेक्टिव से बोलूँ या मैं डेरिवेशनल बोलूँ, दोनों के डिफरेंस को भी क्लियर करना। यू नीड टू क्लियर द डिफरेंस ऑफ दिस, देन यू नीड टू नो हाउ टू सर्व दिस। जब आपको पता हो आंसर क्या है, सर्व करना है, करने का तरीका क्या है, राइट, एवरीथिंग एवरीथिंग क्लियर। दो चीज़ें हमेशा दिमाग होती हैं, दैट मेरा आंसर परफेक्शन में कैसा आएगा, और मैं आंसर को किस तरह पॉइंट आउट करूं कि रीडर को लगे कि हाँ ये आंसर में वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। तो यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। एक दो आंसर बताता हूँ आपको, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ हो गई। MEG 02,
and we have December question answers. जिसके दिमाग में हो कि यार ये कैसे करना है, कहने का तरीका क्या होगा, बेसिक फॉलोअप क्या होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस कर सकते हैं. यस, वी कैन गेट ऑल द थिंग. एक फाइनल सजेशन, जिनका कल पेपर है, यस जिनका कल पेपर है उनको लग रहा है कि यार ये करना है, सर कोटेशन कौन कौन सी होंगी जो हमें आनी चाहिए. अब कई सारे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं सर कोटेशन बता दो. मे नॉट बीन क्लियर कोटेशन, तो कोटेशन लिख लो यार जो आपको मिलेंगी, जो पेपर में आएंगी कंफर्म. मेरे पास सारी रेडी होती हैं. यहाँ पे किसी ने बोला सर प्लीज़ आप बताएंगे कि सर ये कोटेशन के आंसर कैसे लिखने हैं, हाउ टू राइट द आंसर ऑफ दिस आर्टिस्ट. तो चलो हम बोलते हैं यहाँ, इफ़ यू कुड हैव अ चाइल्ड, बताने कहाँ से, इफ़ यू कुड हैव अ चाइल्ड एंड इट वुड डाई, इफ ओनली आई कुड वॉच यू फेस दैट. I repeat, if you could have a child and it would die, if only I could watch you face that. It was really one of the best piece that was written by, कौन सा नाम बताओ, and the story, sir, look back in anger. Now honestly I've been talking about this is something that we guys need to understand. इसके concept क्या है. Contest, when Jimmy was talking about his wife and the experience that she must go as he want that to happen with her. And it was in anger when he was really talking about this, but really further on in the story this already happened. This quote spoken by Jimmy demonstrates his vicious anger towards Allison. The quote is an example of the dramatic irony as well as the foreshadowing. Its foreshadow future events in the play which Allison loses her pregnancy, Jimmy's child, to miscarriage. It's a dramatic irony in the audience already knows Allison is pregnant when Jimmy speaks these lines. Yes, when Jimmy speaks these lines, she was already pregnant, but he does not realize the fact. Without the suffering of losing something close and important to her, Jimmy sees Allison as an incomplete or unborn person, incapable of true emotions and life, because he thinks so. That's the reason that we guys need to understand. So this is the way you guys need to give an example. First reference, then context, and then come up with the explanation. अनुवाद यदि MG2 कोई भी 7 ड्रामा कर सकते हैं. any is 7. yes, any is 7. you can do any is 7. तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. देन विल गो टू अदर पार्ट. 7 years and the summer is over. I repeat, 7 years and the summer is over. 7 years since the Archbishop left us. He was always kind to his people, but it would not be well if he should return. King rules or a balance rules. We have suffered various oppressions, but mostly we are left to our own devices. And we are content, I repeat, we are content if we are left alone. Chorus. Yes, chorus. The story has been taken from Modern Cathedral by T.S. Eliot. Here the chorus was being talking about the arrival of Archbishop after 7 years of exile. Yes, after 7 years of exile. And then we'll go to the next part, that is explanation. Yes, this is the explanation that we guys need to know. Here the chorus reveals their complicated feeling about Thomas and the church. Yes, about Thomas and the church, while they lament his absence of the 7 years, nothing that has good to them. Nothing. Seriously. Nothing good has happened to them. They worry about the return when the concerns the most of all that their lives, already marred by suffering, will govern or more complicated. They do not consider themselves immersed in a political world of kings and barons. They worry that the controversy Thomas tears up by returning will cause to them trouble. Yes, definitely life going to become more hellish. The attitude of the miserable complaints over spiritual responsibility is what will change for them through the rituals of the Thomas sacrifice. What will change? So what will change? What are the things that we guys need to clear? And what will happen if we came back to the place now? How would really the king react? What are the basic norm that they need to clear? Everything we guys need to clear here. और कुछ भी नहीं. So here we have the certain norms जिनको आपको honestly clear करना है. Then one more seriously for you guys. In a good play, every speech should be fully flavored. I repeat, in a good play, every speech should be fully flavored as a nut or an apple.
And such speeches cannot be written by anyone who works among people who have shut their lips on poetry. In Ireland, for a few years more, we have a popular imagination that fairy and magnificent and tender. This is the work of sense, the playboy of the Western world. And they're talking about the certain people, those are really being known as the acts of the person who came, the Christy Mohan. Yes, the Christy Mohan. We guys need to understand. The Archbishop murder in Cathedral. Yes, he was murdered. Now, so come on the explanation. The preface is updated to explain the visual note of sense attached to program of the ill-received performance in Abbey's years back. Here in this particular talk, he was talking about the natives of Ireland, those who believe that the acts of Christy Mohan is good. And they just here shut their lips on the heritage and urban refuse to represent the poetry. Yes, they're talking about all this. That how things will change, what are the basic norms that need to keep in mind, and how they're going to serve the best out of it. This all is really very important. तो we guys need to understand points क्या हैं, कैसे क्लियर करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी. इन बिटवीन कमेंट्स में कमेंट्स आने बंद हो चुके हैं. आई होप जिसने यहाँ पे कमेंट किया था कि मुझे सर आप आंसर बताइए आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट और एनोटेशंस के, कि एनोटेशन के आंसर कैसे लिखते हैं वो मैंने यहाँ बताएं. I tell you each and every point. Last annotation for you guys. इसका आंसर आप मुझे बताना कहाँ से आएगा. You know well I couldn't bear to live. I repeat, you know well I couldn't bear to live with a low common man after you too, and it's wicked and cruel of you to insult me by pretending I could. It's from the work of George Bernard Shaw Pygmalion. Yes, Pygmalion, and they're talking about the satram that is really very important. Hello, sir, join right now. Will you discuss ME05? Definitely. You just put out your question. I'll definitely discuss each and everything. Put out your question in the comment box. So we guys need to clear. The weak maybe admire the hero worship, but they may no means to dislike the shun. They never seem to have the last difficulty marrying people who are good for them. This do talks about the real difference between these people, the rich and poor, and how they're going to respond to it. What are the basic norms they need to clear? वो सब यहाँ mention था, and you guys need to know the answers. So this is what must be the way to give the answer of annotations. So I must give you the annotations. क्या करनी है आपने, एनोटेशन कैसे लिखी जाएंगी, वो सब मैंने यहाँ बताई है आपको. आई होप क्लियर होगा कि आपने क्या करना है, करने का तरीका क्या होगा, फॉलोअप क्या करना है, ये सब आप यहाँ देख चुके हैं. Now jump up to the next part. Sir, should I talk about MEG 05? सर 05 की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, चीज़ें कैसे आएंगी, ये कर लेते हैं. अनुराग कह रहे सर लैंग्वेज वेरिएशन, डायलैक्ट, एस्क्लोज, ये सब आएगा ना सर. बच्चा देख, मेरे एक्सपेक्टेशन तो आना चाहिए. लैंग्वेज वेरिएशन या डायलैक्ट बोलो तो शॉर्ट नोट में आ सकता है. वेरिएशन फुल फ्लेश क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन हाँ शॉर्ट नोट में जरूर आ सकता है. एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग वो MEG 05 इलेक्ट्रिकलिज्म थ्योरी, और कुछ और स्टूडेंट हैं जो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने पेपर का नाम बताएं, अपने डाउट्स बताएं, यहाँ आंसर लेके जाएं. सीरियसली आंसर्स लेके जाएं. क्या प्रेजेंटेशन होगी, कैसे करेंगे, करने का तरीका होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ बताऊँगा, सारी चीज़ें यहाँ बताऊँगा. लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. टाइप करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कि सर ये नहीं आ रहा. ठीक है भाई. अब ऐसा कर MEG 5 वाले ब्लॉक वाइज शॉर्ट नोट लिखो, ब्लॉक वाइज शॉर्ट नोट लिखो कि भैया हमें कौन कौन से शॉर्ट नोट करने हैं. ब्लॉक 1 में औचित्य स्वाटा अलंकारा रसा ध्वनि. शुड आई रिपीट? औचित्य स्वाटा अलंकारा रसा ध्वनि. मुझे जो लाइक वाला बॉक्स दे रहा है ना, लाइक में 7 ज़्यादा दिख रहे हैं, वो मुझे 70 क्रॉस चाहिए विद इन 10 मिनट्स. अब देखते हैं कौन से बच्चे समझ रहे हैं, कौन से बच्चे नहीं समझ रहे. जिनको समझ में आ रहा है वो प्लीज़ उसको बढ़ाएं. तो पहला क्वेश्चन ब्लॉक 1 से शॉर्ट नोट्स जो आते हैं, औचित्या स्वाटा अलंकारा रसा ध्वनि. आई रिपीट, औचित्या स्वाटा अलंकारा रसा ध्वनि. ये आपने करना है कौन से, फर्स्ट ब्लॉक से. ब्लॉक 2, यस ब्लॉक 2, ईथोस मीथोस. आई रिपीट, ईथोस मीथोस हेमरेशिया. Ethos, mythos, hemorrhagia, and catharsis. That's what we guys need to do. Learner, sir, there is a short question asked in one of the previous question about immediate contest. This is a bit confusing. Don't worry, I'm going to give the answer. Explain B कर दूंगा, उसके आप टेंशन मत लेना. जो भी दिक्कत होती है just comment box में I'll definitely give the answer.
So first of all, make sure that these are short notes that you guys need to prepare block wise. ये block wise आपको prepare करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी. So I repeat the block 2 short notes. Mythos, ethos, hemorrhagia, that's a tragic flow. Purification, that's a catharsis, that is clarification 2, or that is purification 2. Next, romantics, we have the first, emotion recollected in tranquility. Sir, emotion recollected in tranquility. इसके चार पार्ट थे. सबसे पहले ऑब्जर्व करना, फिर मेमोरीज को रिकलेक्ट करना, फिर फिल्टर करना, और फिर इमोशंस को एक्सप्रेस करना. आई होप यू गेट दिस पॉइंट्स. ये हैं हमारे रोमांटिक क्रिटिज्म के. सर न्यू क्रिटिज्म क्या होगा? प्रैक्टिकल क्रिटिज्म. शॉर्ट नोट्स में प्रैक्टिकल क्रिटिज्म. प्रैक्टिकल क्रिटिज्म और कुछ नहीं होता, न्यू क्रिटिज्म ही होता है, तो आपने वो करना है. लिंग्विस्टिक साइन, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, रेजिस्टेंस टू थ्योरी, मिकेल बक्तन. अगर नहीं आता तो गाइस नोट्स आपके पास हैं. नोट्स से आप सिर्फ रीडिंग करेंगे एंड यू विल गेट एवरीथिंग क्लियर इन योर माइंड. कम नेक्स्ट वन, Shanu Samrat. Sir, my paper is on 12th, BG 106. Now, please discuss about the important short notes. Definitely, I'm going to give it. Don't worry. I just come to Shanu बड़ी लेट आया हुआ. ठीक है, class is going to over very soon. आप अभी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं. I'm going to discuss the short notes. Don't worry. Marxism, mode of production, base, superstructure, idealism, social realism. I repeat. Base, superstructure, idealism, social realism, and mode of production. And all these Suzerian principle of science system कुछ नहीं है, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड वो उसको बताएगा. ब्लूम वाला अमेरिकन है और ये यूरोपियन है. मैं आंसर दे चुका हूँ पहले बच्चा इसको. नेक्स्ट, फेमिनिज्म के शॉर्ट नोट्स. गायनो टेक्स्ट, आई रिपीट, गायनो क्रिटिज्म बी बोल सकते हो, इज गायनो टेक्स्ट 2. देन वी हैव द सेकंड सेक्सेस. व्हाट डू मीन बाय द सेकंड सेक्सेस? वुमन इज अ रीडर, वुमन इज अ राइटर. The communication chain. I repeat, communication chain. Deconstruction. Number one, deconstruction, that is free play of science. Yes, the free play of science. Irony, signifier, signified. सर लिंग्विस्टिक साइन पढ़ा था, वही है, कुछ अलग नहीं है. कंटेम्प्रेरी में लास्ट ब्लॉक, सर जॉयसेंस को क्लियर करना. व्हाट इज जॉयसेंस? जॉयसेंस द वुमेन सेक्सुअल प्लेजर, उसको हाईलाइट किया. सर उसका टेक्स्ट से क्या लेना है? टेक्स्ट में क्यों वुमेन राइटिंग नहीं होती? क्या वुमेन व्यूज को नहीं बताया गया? यस, दैट्स जॉयसेंस. उसको क्लियर कर लेना आप लोगों ने. दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साइको एनालिटिकल, आई रिपीट, साइको एनालिटिकल थ्योरी, वो भी इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. वो इस ब्लॉक में आती है. आपने कहा सर कंटेम्प्रेरी, तो आपने कहा था नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है. ये 2 क्वेश्चन कर जाओ अगर पढ़ना है तो. मन करे तो, नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है. डिस्कस लैकेंस मेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्रिटिकल थ्योरी. I repeat, discuss Lacan's main contribution to critical theory and compare and contrast modernist and postmodernist approaches to literature. I repeat, compare and contrast modernist and postmodernist approaches to literature. I hope you are clear with these questions. तो जो ये लिख चुके हैं उनके लिए सीरियसली और कुछ करने की जरूरत नहीं है. You guys need not do anything. You'll clear with each and every point. Clear with each and every point. That's what I really want for you. Then we'll come to the short notes. Yes, the short notes for BG 106. That's the understanding poetry. This paper is on 12th. So I hope that you guys really very much prepare for these questions. Now how are you going to clear this? इसके concept क्या है, कैसे follow up करोगे? एक एक चीज़ को on tip करना ज़रूरी है. Yes, you guys need to know each and everything. तो भाई short notes लिखना शुरू करो. शानू, your turn starts now. The Elizabethan sonnets, the first Elizabethan sonnet. सर ये sonnet तो पता होना चाहिए. और Elizabethan sonnets कौन से हैं ये हमें पढ़ने पड़ेंगे. सर आर these sonnets are from the Chaucer period, Patrician, or sir from the Edmund Spenser point of view. Quantitative meter, what is quantitative meter? अब अगर आपको लगे कि सर मुझे इसके आंसर नहीं आता है, I don't know the answer of these questions, then go to my shorts. Shorts मैंने सारे के सारे डाले हुए हैं. Metonymy, Anthroponopoeia, Aposis, Odd, Metaphor, Imagination, Ferris. I repeat, सारी सब दोबारा रिपीट करता हूँ. There is a sonnet, quantitative meter, metonymy, anthroponopoeia, apopsis, odd, metaphor, imagination, Ferris. ये वो सारे आंसर हैं जो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे. मैंने सारे के शॉर्ट्स डाली हुई ऑलरेडी. Then we have Congress, rhyme scheme, metaphysical poets. There's something called metaphysical poets. So Dominic John Donne, Alexander and Herbert. एंड्रू मावल की बात की थी मैंने. नेक्स्ट वन,
Elegy the movement. Yes, elegy the movement. Imaginism, black art movement. Lyric, Harlem Renaissance. I repeat, Harlem Renaissance. Allegri, Gothic, elegy, strong stress meter. Yes, strong stress meter. Slabel, what is Slabel? Anaphora, Cadman, Edmund Spencer, the Cookery School of Poetry, the descendant poets of 18th, 19th century, William now Bradford, the beat poets, Henry Dolgio. The last two or three, that is Annals School of History, Geoffrey Chaucer already mentioned, I've told you, Scottish Chaucer mentioned, ये सारे के सारे आप लोगों को clear होने चाहिए, and these will be the part of your short notes. So I hope you guys have write down all these. सर दो चीज़ों लिख लो यार, कौन सी पोइट्री की एप्रिसिएशन आ सकती है. शानू ये तेरे लिए बोनस है. It's the bonus for you. Poetries that really be there as in critical appreciation. On the late Mascar in Piedmont. I repeat, on the late Mascar in Piedmont. You can watch the video. Yes, those come really first. And on this channel, guys, subscribe to the channel immediately so that you can follow each and every video. Pet Beauty, Ganesh, the Snowstorm. The Negro Speaks of River. The Negro Speaks of River. Keep it here. पेपर बात करेंगे. A hot noon in Malabar, Trenton Abbey, Bavarian janitors, church going. The snowstorm, a supermarket in California, the mental Nala in our exile. The Negro Speaks of River. I told you earlier that you should keep this in your mind. Sunflower Sutra, the Emperor Ice Cream, the Dead Body. And the last one on the list, that is To His Coin Mistress or To Grecian Urn, How to Paint a Water Lily, The Snowstorm, and the Light Birds breaks the lunatic sleep. This is what you guys have to clear. Learner, sir, does IGNOU include questions from all the blocks? I'm targeting for 5 blocks. For MEG 5, target least 6 blocks. I'll be at least 6 blocks जिसमें सबसे पहले रखो मार्क्सिज्म को, नंबर 2 फेमिनिज्म, नंबर 3 रोमांटिक्स, नंबर 4 क्लासिकल. यस, नंबर 4 क्लासिकल. ब्लॉक नंबर 2 5 6 जिसमें जो हो गया 6 करने 8 है 6 कर ले जस्ट 6. दैट्स मोर देन अनफ. सर कुछ पोइट्स भी जिनकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन हमें आनी चाहिए. वी नीड टू नो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. फर्स्ट विलियम शेक्सपियर, सैमुअल जॉनसन, वॉल्ट व्हिटमैन. वॉल्ट व्हिटमैन इज रियली इम्पोर्टेंट. Allen Ginsberg, W.B. Yeats. K.K. Daruwala, William Carlos, Robert Browning, Samuel Johnson, Philip Larkin, Arun Kolatkar. Yes, you cannot leave Arun Kolatkar. Jan Mahapatra, Andrew Marvell, and William Carlos William. And the last, not the least, was Stevens. तो ये वो पोइट हैं जो आपको आने चाहिए. Yes, you should know, not should यार. You must know. तो ये आएंगे तो चीज़ें हो पाएंगी. जब चीज़ें हो पाएंगी तो आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा कि सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स को आते हैं एंड दे नो हाउ टू गिव द आंसर इन अ बेटर वे. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी गाइस नीड टू क्लियर. सिर्फ ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को आने चाहिए. बाकी फिलहाल कुछ बचा नहीं है. कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं आ रहा, स्टूडेंट्स को डाउट्स है नहीं. तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड से गुड नाइट टू एवरीबडी एंड डू वर्क हार्ड. आई गेस टुमारो यू आर गोइंग टू हैव अ लाइव सेशन अराउंड 3 or 4, नॉट इन द नाइट बट इन द नून. यस, अबाउट 3 or 4. तो उसको करेंगे. करने का तरीका होगा. सर कौन से बोर्ड कब से हैं? सर बोर्ड्स कब से हैं? बच्चा डेट शीट ऑलरेडी आने वाली है. आपको विद इन 10 days आपको बोर्ड मिल जाएगी. CBSE की तैयारी शुरू करो. फिर हम आएंगे CBSE पे. यस, फिर आएंगे CBSE पे. 10th 12th के स्टूडेंट भी मेरे नाराज़ है बहुत कि सर हमारी वीडियोज़ नहीं आ रही हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे आप. Definitely I'm going to do everything for you guys. Need not to worry. All my subjects are waiting for me and I'll definitely be there. So guys, be ready. Yes, you guys need to be ready. क्योंकि हम यहाँ आएंगे और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे. एक एक चीज़ पढ़ के जाएंगे और समझा के जाएंगे. तब तक मिलते हैं guys. Good night, शबा खैर, and all that what you need to do is to work hard. Wish you all the best here.